ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના ચેરમેન યોગ સેવક શિષપાલજીએ સુરત સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના ચેરમેન યોગ સેવક શિષપાલજીએ સુરત સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આધુનિક જીવનશૈલી અને ખાનપાનની આદતોના કારણે બેઠાડું જીવન જીવનારા લોકો વધી રહ્યા છે। રાજ્ય સરકારે મધસ્વીતા મુક્ત ગુજરાત અભિયાન દ્વારા મધસ્વીતા નિવારણ અને સ્વચ્છ જીવનશૈલીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અભિયાન પાડ્યું છે। ભારતીય સંસ્કૃતિને દેન સમાન યોગ દ્વારા નિરોગી જીવન જીવી શકાય તે માટે યોગ બોર્ડ કાર્ય કરી રહ્યું છે। રાજ્યભરમાં 1.50 ટ્રેનરો તાલીમ બંધ કરવામાં આવ્યા છે। તેમણે કહ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારના ગતિશીલ નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ સ્વચ્છ ગુજરાત મધસ્વીતા મુક્ત ગુજરાત અભિયાન દ્વારા મધસ્વીતા નિવારણ અને સ્વચ્છ જીવનશૈલીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કાર્યરત છે। જે કેસ ગુજરાતી સાથે સુનિલ કંચાવાલા સુરત। ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડની સ્થાપના થઈ અને 5 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે। સારા ગુજરાતની અંદર યોગનો પ્રસાર અને પ્રચાર થાય અને ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા ગુજરાતની આમ જનતાની સ્વાસ્થ્ય અને નિરોગી જીવન જીવે એ ઉદ્દેશથી ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવી છે। સ્થાપનાથી પ્રથમ જ ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના ચેરમેન તરીકે યશસ્વી અને ઉર્જાવાન યોગ સેવક શ્રી શિષપાલજી રાજપૂત પ્રથમ જ ચેરમેન તરીકે નિયુક્ત થયા છે। પ્રથમ એમની 3 વર્ષની ટર્મ પૂર્ણ થયા બાદ ગુજરાત સરકારે પુનઃ બીજા 3 વર્ષ માટે એમની નિયુક્તિ કરેલી છે। માનનીય ચેરમેન સાહેબ જે યોગ સેવક શિષપાલજી તરીકે સારા ગુજરાતની અંદર ખૂબ જ ખ્યાતિ ધરાવે છે। 20 લાખથી વધારે યોગના પ્રેમીઓને યોગની શિક્ષા અને યોગ શિબિરો લીધી છે। गुजरात राज्य योग बोर्ड माध्यम थी स्वस्थ गुजरात मेदस्वीता मुक्त गुजरात अभियान अंतर्गत आईडीवाई कॉमन योगा प्रोटोकॉल अंतर्गत अमे 3 मे थी सूरत थी शुरुआत करीए छीए। जेमां आदरणीय हर्षभाई संघवीजी अध्यक्षता में कार्यक्रम थवाना छे। सांजे वराछा में कार्यक्रम थशे। मेदस्वीता मुक्त अभियान अंतर्गत अवेरनेस कार्यक्रम थशे अने 4 तारीखे सवारे डीआरबी कॉलेज वेसू सूरत में कार्यक्रम थशे। आपना माध्यम थी सूरत और गुजरात की समस्त जनता ने आह्वान करवा मांगू छूँ कि आप मेदस्वीता मुक्त थवा मांगता हो, कॉमन योगा प्रोटोकॉल योग सीखवा मांगता हो तो आप आओ, आपने साथे मळीने योग करिए, योगी बनिए, निरोगी बनिए, समाज माटे सहयोगी और राष्ट्र माटे उपयोगी बनिए। धन्यवाद। सूरत में ये 2 कार्यक्रम है हमारे। 3 तारीख शाम को वराछा में है और 4 तारीख को सुबह डीआरबी कॉलेज वेसू में है, जिसमें हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल और मोटापा से मुक्त कैसा हुआ जाए उसके लिए अभियान चलाएंगे, जिसमें गुजरात राज्य के गृह और रमतगमन मंत्री आदरणीय हर्षभाई संघवी जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। पूरे गुजरात के सभी महानगरों में, सभी जिला में और तालुका स्तर तक हमारी क्लास चल रही है। अभी हम तालुका स्तर तक पहुँचे हैं। गाँव में अभी हमारा इस नेक्स्ट ईयर से हम गाँव में पहुँचेंगे। तालुका स्तर तक हमारी क्लासें चल रही हैं और उसकी लिस्ट आप लोग मांगेंगे तो हम एक लिस्ट भी उपलब्ध करवा देंगे। वैसे हमारी वेबसाइट पर जाके देखें www.gujarat स्टेट योग बोर्ड, तो वहाँ पे ये एड्रेस मिल जाएगा। शहरों में फ्री योगा क्लास है। फ्री, ये 5000 फ्री योगा क्लास है। हाँ, शहरों में महानगरों में और तालुका तक फ्री योगा क्लास है। कितने लोगों को अब तक हेल्थ से रिलेटेड जो है आज तक योगा आप दे चुके हैं? गुजरात योग बोर्ड 2019 में बना है और अब 5 साल हो गए। 5 साल में हमने अभी 1.5 लाख योगा ट्रेनर तैयार किए हैं। 5000 हमारी योग क्लासेस चल रही हैं और 20 लाख लोगों में हमें योग की अवेयरनेस लाए हैं। 20 लाख लोगों में हम योग की अवेयरनेस लाए। हमने स्कूल कॉलेजों में हमें नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं। हम अलग अलग डायबिटीज़ दिवस के दिन डायबिटीज़ से कैसे बचना है योग के द्वारा उसका अभियान चलाते हैं। हृदय रोग से कैसे बचना है उसके लिए अभियान चलाते हैं। जेल के कैदियों को हम योग सिखाते हैं जिससे जेल के बाहर आके वो अच्छे नागरिक बन के काम करें। इस तरह अलग अलग गुजरात योग बोर्ड के माध्यम से हम अलग अलग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सौનું સ્વાગત છે। યોગ ભારતીય સંસ્કૃતિની દેન છે। આપણા ઋષિ મુનિઓ યોગ, આયુર્વેદ અને ધ્યાનના સહારે 200 વર્ષ સ્વસ્થ જીવન જીવતા હતા। અત્યારે બેઠાડું જીવન, કસરતનો અભાવ અને માનસિક તણાવના લીધે રોગો વધ્યા છે। એનું સમાધાન છે યોગ। આપણા દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના લીધે 21 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ઉજવાય છે। એ આપણા સૌ ભારતીયો માટે ગર્વ અને ગૌરવની વાત છે। એમના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય સરકારે ગુજરાત યોગ બોર્ડનું ગઠન કર્યું છે।
અને ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના માધ્યમથી અત્યાર સુધી અમે 1.5 લાખ યોગા ટ્રેનરો તૈયાર કર્યા છે, 2 ગિનિસ બુક વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. મિત્રો, અમારું મકસદ છે કે ગુજરાતમાં 10 લાખ યોગા ટ્રેનરો તૈયાર કરવાના અને ગામડે ગામડે સોસાયટી યોગ વર્ગ ચાલે, જેથી એક પણ વ્યક્તિ રોગી ના થાય, દરેક વ્યક્તિ નિરોગી જીવન જીવે એ ભાવથી ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ સતત કામ કરે છે. ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં, આદરણીય હર્ષભાઈ સંઘવીજીના નિર્દેશનમાં કામ કરે છે. સુરત શહેરમાં અમારે 3 અને 4 મે ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના 2 કાર્યક્રમ યોજાયા છે, જેમાં પહેલું કાર્યક્રમ 3 તારીખે સાંજે વરાછા સુરતમાં સ્વસ્થ ગુજરાત મેદસ્વીતા મુક્ત ગુજરાતના અભિયાનના અંતર્ગત અવેરનેસનો કાર્યક્રમ યોજાયો છે કે મોટાપાના શું કારણ છે, એના નિવારણ શું છે, યોગ દ્વારા કેવી રીતે મેદસ્વીતાથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. અને અમારા પાસે એવા હજારો ઉદાહરણ છે જે 5, 10, 15, 20 કિલો અમે વજન યોગથી ઓછું કરાવીએ છીએ. અને સાથે સાથે આઈડીવાયના પણ કાર્યક્રમો છે. તો સવારે 4 તારીખે 5:30 થી 7:30 વાગે DRB કોલેજ વેશુમાં આઈડીવાય કાર્યક્રમ અને મેદસ્વીતા મુક્ત અભિયાનના પ્રેક્ટિકલ અમે આસનો યોગાસન કરાવવાના છીએ. તો આપના માધ્યમથી હું સમસ્ત સુરત અને ગુજરાતની જનતાને આહ્વાન કરવા માંગુ છું કે યોગ આપણી સંસ્કૃતિ છે, યોગ આખા વિશ્વને ભારતીય સંસ્કૃતિની અમૂલ ભેટ છે. આપણે પણ બધા સાથે મળીને યોગી બનીએ, નિરોગી બનીએ, સમાજ માટે સહયોગી અને રાષ્ટ્ર માટે ઉપયોગી બनिए. धन्यवाद. आपनो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ ही सकीશું. भारतीय संस्कृति की विश्व को अमूल भेंट है. हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के प्रयत्न से, पुरुषार्थ से पूरे दुनिया में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. ये सब भारतीयों के लिए गर्व और गौरव की बात है. गुजरात राज्य सरकार ने 365 दिन लोग योग करें, उसके लिए गुजरात राज्य योग बोर्ड का गठन किया है. अभी तक हमारे पास 1.5 लाख योगा ट्रेनर हैं, जो पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा योग शिक्षक गुजरात में हैं. 5000 से ज़्यादा हमारी योग क्लासें चल रही हैं. हमारा मकसद है गुजरात में 10 लाख योगा ट्रेनर तैयार करना और 50,000 योग क्लास चलाना. हर गांव में, हर सोसाइटी में योग क्लास चले. अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश को मोटापा मुक्त बनाने के लिए आह्वान किया है और गुजरात सरकार ने आगे आकर स्वस्थ गुजरात और मोटापा मुक्त गुजरात का अभियान चलाया है. तो गुजरात राज्य योग बोर्ड के माध्यम से, गुजरात के माध्यम से हम पूरे गुजरात में ये अभियान चला रहे हैं कि गुजरात को मोटापा से मुक्त किया जाए. और उसके लिए हमने गुजरात के समस्त जिलों में ये कार्यक्रम हमने आह्वान किए हुए हैं और सभी जगह ये कार्यक्रम प्रैक्टिकल रूप से हम लोगों को मोटापा से मुक्त कर रहे हैं. और विशेष रूप से हमने 15 मई से लेकर 15 जून तक हमारी जो 5000 योग क्लासें पूरे गुजरात में चल रही हैं, हम उन क्लासों में 5000 क्लासों में मोटापा मुक्त का अभियान चला रहे हैं, जिसमें 1 महीने के अंदर हम 5 से 10 किलो लोगों का योग के द्वारा वजन कम करेंगे. तो आपके माध्यम से मैं गुजरात की समस्त जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि जो अपना वजन कम करना चाहते हैं और मोटापा के साथ साथ डायबिटीज़, बीपी और अनेक रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वो गुजरात सरकार द्वारा संचालित 5000 योग क्लासों में आए. 15 मई से लेकर 15 जून तक हमने ये विशेष अभियान चलाया है. और साथ में आज सूरत में 3 मई से लेकर 4 मई तक एक बड़ा विशेष कार्यक्रम है, जिसमें आदरणीय हर्षभाई संघवी जी के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा. और ये योग बोर्ड माननीय हर्षभाई संघवी जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा है. 3 तारीख को शाम वराछा में एक मोटापा अवेयरनेस का हमने कार्यक्रम रखा है कि मोटापा क्यों होता है, इसका समाधान क्या है, कैसे निवारण होगा, मोटापा से हम कैसे बचेंगे. और ये हम शाम को समझाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि वो मोटापा से बचें. और अगले दिन सुबह 4 तारीख को DRB कॉलेज वेशु सूरत में हम प्रैक्टिकल लोगों को कराएंगे कि मोटापा से बचने के लिए प्रैक्टिकल योग क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं. और साथ में कॉमन योगा प्रोटोकॉल IDY 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, उसकी कॉमन योगा प्रोटोकॉल की भी हम ट्रेनिंग कराएंगे. तो आपके माध्यम से मैं समस्त देश की जनता को भी आह्वान करना चाहता हूं कि हम सबको योग करना चाहिए. योग हमें स्वास्थ्य देता है, योग हमें शक्ति देता है, योग व्याधियां भी मिटाता है और योग समाधि भी लगाता है. धन्यवाद.